नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. लोकसभा निर्वाचन समागमे INDA दले प्रतिसन्धि रूक्ष बिहार राज्ये राष्ट्रीय परिवर्तनं निर्णायक BJP कोर कमिटी मेलनम् अवलम्बम् NDA सर्वकारस्य शपथस्वीकृतिः श्वः स्यात्. केरले राष्ट्रीय परिवर्तन सूचना इति के सुरेन्द्रः मोदिनः वाग्दाने सार्वजनिकानां विश्वासः. लोकसभा निर्वाचनाय सिद्धतां यादि भारतीय जनता दलं 20 लोकसभा मण्डलेषु पर्यटनम्. प्रधानमन्त्रीम् अधिक्षेपं कृतं नाटकं प्रोग्राम कमिटी निर्देशान् विगणय अवतरत इति शीर्षन्यायालयः. राष्ट्रस्य अखण्डतां परिपाल्य कार्यक्रमं कुर्युः इति निर्देशं विगणितं घटनायां प्राथमिक परिशोधना न्यायालयः. Z+ कैटेगरी सुरक्षा विधाने केरल राज्यपालः SFI अत्याचार हेतुना केंद्र गृह मंत्रालयं सुरक्षा विदत्त आरिफ मुहम्मद खानाय CRPF Z+ सुरक्षा विधानाय निर्देशं प्रवृत्तं. राजभवनाय च समान सुरक्षा विधानम्. वार्ताः विस्तरेण. अमेरिकायाः राष्ट्रपति निर्वाचनं समागमे कार्ये डोनाल्ड ट्रम्पाय प्रातिकूल्यता जाता. माध्यमप्रवर्तकाय प्रदत्ते मानहानि अभियोगे $300 मिलियन् नष्टपरिहारधनं प्रदातुं मान्हाल्टन् न्यायालयः विदत्तः. विधिं विरुध्य उच्चन्यायालयं पर्यवेति इति ट्रम्प प्रतिकरोत्. नवत्युत्तरनवदशशतके आसीत् अभियोग हेतुना जायत. मान्हाल्टन् प्रदेशे अतिथिसुवासे माध्यमप्रवर्तकां जीन् कारलं डोनाल्ड ट्रम्प अवमानयत् इत्यस्ति कारलस्य आरोपणम्. नवदशोत्तरद्विसहस्रे काचन मासिकाये प्रदत्ते अभिमुखे आसीत् कारलिन् विषयं प्रकाशयत्. परं प्रवृत्त नियमयुद्धे मान्हाल्टन् न्यायालयः दण्डं विदत्तः. कारलायाः अधिवक्तृणा अपृच्छत् संख्यायाः 8 गुणित संख्या न्यायालयः विदत्तः. नवन्यायाधिपानां न्यायपीडिका 5 दिनानि वादश्रवणं कृत्वा विधिप्रस्तावम् अकरोत्. अभियोगे विधिप्रस्तावात् पूर्वम् एव ट्रम्प न्यायालयात् बहिर्गतवान्. विधिं विरुध्य उच्चन्यायालयं पर्यवेति इति अयं विज्ञापयत्. साहचर्येऽस्मिन् अस्य मासान्ते पौरवञ्चनाभियोगे तथा राष्ट्रपतिनिर्वाचने ट्रम्पस्य अभ्यर्थीयोग्यता विषये च विधिः भविष्यतः. निर्वाचनं लक्ष्यीकृत्य बैडन् तथा डेमोक्राटिक् दलं च गूढचिन्तनं करोति इत्यस्ति ट्रम्पस्य वादम्. वार्तादलं जनम्. भारते ओलिम्पिक्स् सञ्चालनाय प्रयत्नः अवष्टम्भेति फ्रेञ्च् प्रेसिडेण्ट् इमानुवेल् मैक्रोन् प्रतिमेत् विज्ञापयत्. भारतं फ्रान्स् च प्रतिरोधवाणिज्यरङ्गे सहकारितां करिष्यति. प्रतिरोध बहिराकाशभागधेयता विषये फ्रान्स् सायुधसेना मन्त्रालयं भारतेन संविदाकरणम् अकरोत्. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रवृत्ते मेलने आसीत् निर्णयः प्रवृत्तः. And we will be delighted to build a stronger cooperation on sports and this type of event as well with you, as we will definitely support your intention to organize Olympic Games in India for the future. बिहार राज्ये JDS BJP सख्य सर्वकारः अविलम्बं प्रशासनपदम् अवाप्नोत् इति सूचना. मुख्यमन्त्री नितीश कुमार श्वः राज्यपालं सन्दर्शयितुं साध्यता वर्तते. नितीशेन पुनः सख्यताकरणे BJP देशीय नेतृत्वम् अन्तिमनिर्णयं स्वीकरिष्यति. BJP कोर कमिटी मेलनाय देशीय अध्यक्षः JP नड्डा बिहार प्राप्नोत्. JDS दलस्य प्रवर्तनसाहचर्ये प्रतिसन्धो वर्तते प्रतिपक्षसख्यम्. राहुलस्य भारत जोडो यात्रा बिहार राज्यं प्रवेशन् साहचर्ये INDA सख्यस्य प्रमुखनेता नितीश कुमार पुनः भारतीय जनता दलेन सहयोगाय सिद्धो भवति. नितीश कुमार मुख्यमन्त्री तथा भारतीय जनता दल प्रतिनिधयोः उपमुख्यमन्त्री स्थानद्वयेन नवीनमन्त्रिसभा अविलम्बं शपथस्वीकृतं कृत्वा प्रशासने भविष्यति इति सूचनाः सन्ति. राज्यतले राजनैतिकचर्चाः प्रचलन्ति. RJD सख्यसर्वकारस्य स्थानपरित्यागाय शपथस्वीकारसमयनिर्णय
क्षमयायाच राज्यपालं सन्दर्शितुं समयम् अपृच्छत् मुख्यमन्त्री नितीश कुमार। संस्थाने कांग्रेस् दलस्य 19 सामाजिकेषु 10 जनाः भारतीय जनता दल नेतृत्वेन चर्चां करोति इति सूचनाः सन्ति। सख्यसाध्यता निराकरणं नास्ति इति बीजेपी नेता सुशील मोदी व्यक्तयति। समयेव नितीश कुमारेण सख्यरूपीकरणे बीजेपी देशीय नेतृत्वम् अन्तिमनिर्णयं स्वीकरिष्यति। पूर्वं सख्यं बहिष्कृतस्य नितीशस्य सम्मुखे बीजेपी कर्षण उपाधयः संस्थापितं वर्तते। लोकसभा निर्वाचनात् परं मुख्यमन्त्री स्थानं वर्धिच्य भारतीय जनता दलाय अवसरं प्रदातुं च साध्यता वर्तते। वार्तादलं जनम्। उत्तराखण्डस्य मद्रसासु श्रीरामचरितं पाठयिष्यति। मार्च मासात् नवीकृत पाठ्यपद्धति प्रावर्तिकं भविष्यति इति उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड व्यक्तयत्। भारतस्य इस्लामिकजनानां DNA रामं निबध्नात् इति वक्फ बोर्ड चेयर्मन् शदाब शम्स अवदत्। मुहम्मद नबिनः कथाः कुरान् इत्येतैः साकं भगवतः श्रीरामस्य कथाः च मद्रसा पाठ्यक्रमे आयोजनाय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड निर्णयः स्वीकरोत्। मार्च मासात् नवीकृतः पाठ्यक्रमः प्रावर्तिकं भवति। मद्रसानाम् आधुनिकवत्करणस्य अङ्गतया भवति पाठ्यक्रमस्य नवीकरणम्। औरङ्गजेबस्य कथानां स्थाने भारतीय यवनधर्मविश्वासिनः श्रीरामस्य कथां पठेत्। अरब मंगोलिया अफगान वंशजाः न सन्ति। भारतीयाः इस्लामिकविश्वासिनः हिंदी इस्लामिकविश्वासिनः सन्ति इति उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड चेयरमैन शदाब शम्स अवदत्। तो मैं कह रहा हूं हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं, सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा DNA श्री राम से मिलता है। बालेषु धार्मिक मूल्यानां संवर्धनाय भारतीय युगपुरुषाणां चरित्रपठनम् अनिवार्यं भवति। मद्रसासु NCERT पुस्तकानि च पठनाय वक्फ बोर्ड निश्चिनोत्। उत्तराखण्डे 17 मद्रसासु नवीकरणाय प्रवर्तननिर्णयः पुरोहितः अङ्गीकरोत् इति वक्फ बोर्ड चेयर्मन् व्यक्तयत्। वार्तादलं जनम्। अयोध्यायाः रामजन्मभूमि मन्दिरे भक्तानां सम्मर्दः निरन्तरं वर्तते। मन्दिरं गच्छन्तीनां भक्तानां कृते सर्वाणि सुविधानि सज्जीकृतानि इति रेञ्ज् IG प्रवीण कुमारः प्रस्तौत। अवकाशदिने सम्मर्दवर्धनाय साध्यता भवति। भक्ताः ऐतिह्यकालात् परं मन्दिरदर्शनं करोति चेत् उचितं भवति इति अयम् अवोचत्। दर्शन लगातार भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल भी लगभग 3.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है हेड काउंट्स के हिसाब से, और हम लोग लगातार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोगों का है क्योंकि आज सैटरडे संडे भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी संख्या में लोग आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लोग व्यवस्था के लिए सुदृढ़ हैं। ठंड है और ठंड को लेकर के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से फिर भी एक आग्रह किया था कि बूढ़े लोग हैं, हमारी माताएँ हैं जो अशक्त हैं, तो उसके क्रम में आप लोगों के माध्यम से भी अपील करा रहे हैं क्योंकि इस भीषण ठंड को देखते हुए एक आध हफ्ते बाद आना श्रेयस्कर होगा। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको साष्टांग सम्मान करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। लोकसभा निर्वाचनात् पूर्वं संस्थानेषु निर्वाचनदायित्ववाहकानां प्रख्यापनम् अकरोत् बीजेपी। केरलस्य प्रभारी स्थाने प्रकाश जावडेकर अनुवर्तते। देशीय सेक्रेटरी अरविंद मेनोन तमिळ्नाडु लक्षद्वीपयोः दायित्वं स्वीकरोत्। लोकसभा निर्वाचन प्रचारण प्रवर्तनानि प्रारब्धः। बीजेपी विविध संस्थानेषु निर्वाचनदायित्वं संवहन् प्रभारिणः सह प्रभारिणः च प्रख्यापयत्। केरल राज्य प्रभारी स्थाने भूतपूर्व केन्द्रमन्त्री प्रकाश जावडेकर अनुवर्तते। बीजेपी देशीय सेक्रेटरी मलयाळी अरविंद मेनोन तमिळ्नाडु लक्षद्वीपयोः दायित्वं वहति। राष्ट्रीय प्रकम्पनानि प्रचलन् बिहार राज्ये देशीय जनरल सेक्रेटरी विनोद तावडे दायित्वे अनुवर्तते। अधिकेषु राज्येषु संघटना दायित्व निर्वाहकेभ्यः प्रभारिभ्यः एव निर्वाचन प्रवर्तनानां दायित्वम् अदाद। त्रिपुरा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री बिप्लव कुमार देव हरियाणायाः दायित्वं निर्वहति। जम्मू काश्मीर प्रभारी देशीय जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग एव जम्मू काश्मीर निर्वाचन दायित्वं वहति। केन्द्र सर्वकारस्य विकसनलाभाः चर्चां कुर्वन् प्रचारणद्वारा 400 स्थानानि प्रापणाय प्रयत्नं करोति भारतीय जनता दलम्। वार्तादलं जनम्। राज्यपालोपरि SFI दाष्ट्यं। कोल्लम निलमेल प्रदेशे राज्यपालोपरि SFI प्रवर्तकानाम् अत्याचारः प्रवृत्तः। राज्यपालस्य यानं रुणद्दिम् अकरोत्। वाहनात् बहिरागतः राज्यपालः होराः यावत् मार्गे प्रतिषेधम् अकरोत्।
अत्याचारस्य पृष्ठभूमौ मुख्यमन्त्री वर्तते इति आरिफ मुहम्मद खान आरोपयत्। My only question is, if Chief Minister was passing by this road, will police stand with persons holding black flag and allow them to hit the car? I'm not blaming the police. Why I'm not blaming the police? Because police, they also have to take their orders from the superior authorities. And it is the Chief Minister of the state who is promoting lawlessness in the state. It is he who is giving direction to the police to give protection to these lawbreakers, and they are only daily wagers of the party. They are daily wagers of the Chief Minister. So it is Chief Minister who is responsible. राज्यपालं विरुद्ध्य प्रवृत्त अत्याचारविषये केन्द्रसर्वकारस्य प्रक्रमः राज्यपालाय राजभवनाय च Z+ केटगरी सुरक्षा विधानाय केन्द्रगृहमन्त्रालयस्य निर्णयः प्रवृत्तः। चीफ सेक्रेटरी उद्योगस्थं स्थानरक्षक मेधाविधानं च समाह्येदं त्वरित विशदीकरणप्रदानाय निर्देशं प्रवृत्तं। साहचर्यावलोकनाय उन्नत रक्षकोद्योगस्थः मेलनम् अकरोत्। INDAA दलसम्बन्धी विषयाः पूर्वमेव चिन्तनम् अकरोत् इति CPM नेता सीताराम येचूरी नितीश कुमारेण तथा ममता बनर्जिना निबन्धनात् विषयाः लोक आलोक्येति अयम् अवदत्। वीणा विजयस्य विषये संस्थान नेतृत्वम् उत्तरम् अदाद। प्रजातन्त्रविरुद्ध वृत्तन्तया राज्यपालः अकरोत् इति सीताराम येचूरी प्रतिकरोत्। India and its issues will all be discussed in the meeting, and we'll also see as the developments take place. But according to the plan that India took, in many states, in fact most of the states, the seat adjustments. Yeah, but the governor, that has been very clearly, not only us, even the highest of judiciary has found fault with him for sitting on bills for such a prolonged time. This is not the way that the governor should function. Very, very absolutely anti-democratic. वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बन्धिते अग्रिमवार्ता संस्कृतं पारश्वः सायं पादोन पञ्चवादने अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनन्TV.com सन्दर्श्यतां। शुभं भूयात्।